Get ready, my soul. I'm diving in. Get ready, my soul. I'm diving in to the deepest kind of love, to the sweetest kind of life. Get ready, my soul. A very, very, very good morning to all of you. Welcome. Welcome yet again on this powerful journey of self discovery. And very happy, grateful, and excited to have all of you here and all of us here to transform our lives with love and transform our lives with doing newer, more beautiful things together. So, thank you so much and welcome on our day 4 of this journey. We are almost on the middle of the week. हमने एक वीक का हाफ पार्ट we have covered. तो एक नई चीज करने की consistency for like 4 days. I think it's new and big. So ये chance है to even thank ourselves and applaud ourselves कि हम खुद को ये जर्नी पे लेके आए and हम खुद को ये जर्नी पे कंटिन्यू करा रहे हैं. So yes, welcome, thank you, and yes, thank yourself for being here and being part of this. Mm, Today, we will start with a group check in, a community check in. हाँ, अभी मेरे को एक थोड़ा सा रियलाइज हुआ, मतलब ऐसा दिखा आंख बंद करके 3-4 दिन तो मेरे को कुछ इतना फीलिंग नहीं आया, मगर आज एक दरवाजा दिखा जो अंधेरा था, उसमें से थोड़ी सी रोशनी जा रही है। कभी नहीं दिखा ये आज मेरे उसको देख के कि मैं बोला ये सच है कि फिर ऐसे वही दिख रहा था, और अभी तक मेरे को कभी नहीं दिखा। ये के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक। Thank you for sharing beautifully. Thank you. I'll go ahead. So, like, closing my eyes, it was like पहला एकदम instant moment होता है, like how you leave your breath. Your body's just relaxed and you're so centered. And, I was just thinking, it's been so many days. How do I feel about this? There was also a slight comparison between magic because, I'm doing power for the first time. And that book is more about doing. वो बुक में ऐसा है you're we are doing activities on end of a chapter, and some days are so busy, so like at the moment बोलते ना जो लाइफ में जिस वक्त जो चाहिए वो exactly आपको वही मिलता है. तो at the moment I think this is what I need, not to even do an activity, maybe just to listen something positive, just to be part of something. I mean, every morning हम सुबह जितने भी लोग आते हैं, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि हर एक के मन में एक इंटेंशन है, इवन टू शो अप, टू बी देयर, इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन. तो टू शेयर अ स्पेस विथ सो मच इंटेंशन ऑफ सेम, everybody is finding their own power, but to have that shared emotion, तो just like feels very comforting, feels safe. I'll go in. So I think so the best part of doing this was I remember my wife always asking me not to take mobile in the morning, and usually it's a tendency to first check what's happening around the world. Um, but starting a day with this has definitely changed how I perceive my day. So that says quite a lot.
Uh, I think for me, it's a very similar feeling what people shared up till now, that just starting the morning with this, I think makes a lot of difference. And just the stories even that we heard yesterday, and I'm sure we'll hear more of such stories on how everyone is practicing this in their daily life. It also makes it feel real and doable. Otherwise, it's just like, I'm reading something and first thought I'm wondering is it even possible? So somehow that's not there. That doubt is not there this time. Maybe people, I don't know, maybe because doing it together or what is it, but I'm not so much in doubt, but I'm rather in conviction that this works, and we can all do something like this together. Itself feels like a blessing in some ways, because somehow I feel such kind of groundings are really helpful, uh, just to go through whatever is happening in life in some ways. So that way, I'm very grateful that we all are doing, and whatever took all of us to get together. From last 1 month, I'm totally in this power. So I'm going to flow with this power. Thank you so much. Thank you for being here again. She's my cousin, and we did literally this started with this group after Kunal, and now this. So thank you for really being part of this journey. Thank you. And it's literally her story, and that made me believe. I think before it started working for me, it started working for them, and that kept my conviction on. So thank you. Thank Yeah, I can share. you. Yeah, Actually, I'm busy with the morning routine. My kids are at home. got So, it. yeah, so I think it has been wonderful, like just join this group, and I think I just needed this. And I'm feeling my power, I can it's feeling like whatever I'm very powerful, first of all, and also like whatever I think, and I put my energy to, probably I can achieve that. So I think, as I think other people also said, that starting the morning with this is, it has been fantastic, and I think it has been the best decision, and that's bringing me each day over here. Although since it's raining here a lot, so kids are at home, but I am listening. Maybe not fully present how much I would like to, but yeah, I am here with all of you. Thank you. Thank you for sharing. Aram, are you there? Are you listening? I saw some claps, but we'd love to hear from Yeah, you. yeah, Bhumi, I'm listening. Acha, what is present with you? Can you share? ये book reading में क्या present है, क्या available है, or just one word of what you're feeling right now. I can give a word lost, but maybe I'm some feeling other. great. Okay, got it, This got is it. satsang, right? Indeed, indeed. Yeah, Got it. thank you. Thank you. All right. So thank you all of you for sharing. It was truly heartwarming to hear from all of you. And your suggestions and inputs are really valuable. And we tried to already implement some suggestions we have gotten, and they made a difference. So thank you for those who gave. And we'll keep wanting to hear from more. Thank you so much for being here and being part of this incredible journey to change all our lives together. सो आई थिंक वन ऑफ द सीक्रेट फैक्टर जिंदगी बदलने का एक इंसैनिटी की डेफिनेशन है कि डूइंग द सेम थिंग एवरी डे एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज अ श्योर शॉट वे ऑफ इंसैनिटी लाइक हर रोज सेम चीज कर रहे हैं और सोच रहे कुछ नया होगा, कुछ बदलेगा. It doesn't work. So yes, probably we have already started doing things new, and that itself is reason enough for life to transform. Like it takes just 1 degree for a line to become, just go and change its course. So we have already changed our course, by being on this journey. So yes, let's thank and applaud ourselves for being here. And we just jump into this. We already looked at what Jesus said कि जो दोगे वो मिलेगा, और जो क्वालिटी का दोगे, जो लेवल का, जो मेजर का दोगे, वही रिटर्न में मिलेगा.
So again, the same thing, we look at it different way and see it as we are just going against the conditioning of probably lifetimes, conditioning of generations. तो ये पत्थर पे रोज पानी डालने जैसा है. Maybe 10 दिन पानी डालेंगे कुछ नहीं होगा, but then we will know the edges would soften. With consistency, it will take a different shape. It is same with life. It's same with this power also. So yes. Kanshu, are you ready? Can you see the book? Yes, yes. I see the book. Ah, perfect. Chalo. Good morning, everybody. It's great to start with some sharing. So I'll just continue. Are you going to share more? I have a lot to share, but I would like to read also. I'm Good. enjoying reading the book, honestly. I don't remember बोलते ना जैसे उन्होंने बोला कि याद नहीं मैंने लास्ट पेन कब उठाई थी तो मुझे भी ऐसे याद नहीं मैंने इतना कब रीड किया था विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बिकॉज आई टोल्ड यू आई रीड फॉर वेद एंड वीर माय यंग किड्स तो वो एक एक सेंटेंस में मुझे एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करना पड़ता है उसकी अलग खुशी है तो यहाँ पे आई हैव अ लिटिल एडल्ट क्राउड so where I can read, like I can literally read. So I'm enjoying this new phase, honestly. Got it. Reading in mind is different, reading out loud is completely different. So I am actually grateful for this opportunity. And those who would like to, with Kanchu being on mute, you all can also read out loud for yourself. It helps. Thank you, Kanchu. Okay. What you give, you receive. Give help and support to a friend when he's moving house, and most surely that help and support will return to you with lightning speed. Give anger to a family member who let you down, and that anger will also return to you clothed in circumstances of your life. You are creating your life with your thoughts and your feelings. Whatever you think and feel creates everything that happens to you and everything you experience in your life. If you think and feel, I've got a difficult and stressful day today, then you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make your day difficult and stressful. If you think and feel life is really good to me, you will attract to you all people, circumstances, and events that will make life really good for you. 2 दिन से I was telling, yeah, I'm new to Zoom, it's hard. I'm new to Zoom. So Zoom was like, okay, you want it? No, I'll give you. So all the setting and something happens and it doesn't work because I asked for it. अरे मैं नई हूँ मुझे नहीं आता है. Okay, so it will give me more opportunity to feel मुझे नहीं आता है. And I think one of you probably even got that to my attention. So it is so much in our language के हम बोलते हैं चीजें होती है और हम बोलते हैं कि देखा मैंने बोला था बट अरे हमने बोला इसीलिए हुई हमने सोचा इसीलिए हुई हमने मांगा इसीलिए हुई there's this I think famous case study or famous story in some American company placed a big order with a Japanese company and उन्होंने उनके उसमें लिखा था कि we will not accept defects. Only 3% defects we will accept, not more than that. So when Japanese company delivered its products, so it gave 97% perfect products and 3% separately packed products labeled as defect. And with a note के हमें नहीं पता है तुमने डिफेक्ट्स क्यों मांगे बट आपने मांगे तो हमने दिए हैं बट वी जस्ट एम एट डिलीवरिंग 100% परफेक्शन So universe has no scope for defects, but हम मांगते हैं, so it gives because it's our servant. It will, our free will, our choice, our words, our thoughts are creating our reality. तो जो हम मांगते हैं, Zoom नहीं आता है, okay, नहीं आए. ये नहीं आता है, okay, जो आप बोलो वो होगा. And mysteriously, like sometimes उधर करो और उधर होगा. Sometimes इधर करो और उधर से आएगा but आएगा अगर if I am probably like I always say another thing that truly changed my life was a smile card जब I met this person Nipun Mehta many years back and he mentioned random acts of kindness
कि पहले तो हमेशा लगता था कि only giving is to people who are, not financially well off, or who are probably, of a certain status. But I think इनसे Nipun Mehta से I heard for the first time, like giving is really in every action, in every moment, in every interaction. And, just anonymously gifting something to somebody is the best act of kindness. And I remember, as I had mentioned, I was vegan. एक बार I was waiting in a cafe for something. मेरा phone battery dead था. I can't order something because तभी आज से 10-15 साल बाद everything was milk based. So I'm like, let me use this smile card, And that smile card literally उसने मेरी पूरी life design कर दी कि, उसके बाद हर चीज जो लाइफ में हुई somehow वो इंस्टेंस की वजह से हुई that I used it on some strangers, and they ended up sitting next to me. They didn't know like I had paid for their, like, coffee or like their food. And for the next half an hour all they kept talking about is, wow यार किसने किया होगा, क्यों किया होगा. And then they started sharing about few other such good things that happened to them. So single act, how that has transformed probably a conversation from many a times we go into what's not working to what's working. And that made me look up to them again. And literally in 10 days I was in a retreat that they were hosting, and my life wasn't the same ever again. I knew कि मुझे अभी mainstream path नहीं लेना है, and it is simply with that one single act कि मैंने शायद किसी की कॉफी के लिए किया पे, but what it got me, it left me completely on a different trajectory. And I think Drishti will have millions of stories on this journey. Again, like how this intention of just random acts of kindness can bring back such love and joy in our lives. So, and we all do, right? We all do. हम यहाँ किसी का अच्छा करते हैं वहां हमारी चीजें खुलती है, हम यहाँ कुछ करते हैं वहां बिजनेस फ्लरिश होता है. सो यस, जहाँ हेल्प दोगे वहां से कहीं और से बहुत बढ़ के हेल्प आएगी. और जहां गुस्सा दोगे, अगर तुम स्टाफ को गुस्सा करोगे तो कोई और तुम्हें आके गुस्सा करेगा. तुम अगर किसी को नीचा दिखाओगे तो 4 जन और आके तुम्हें नीचा दिखाएंगे. जो है यही का यही है, ये सब हम सुनते आए हैं. सो यस, इट्स ऑल हियर. एंड अगेन, जो हम बोलते हैं वो होता है. हमारा हर शब्द हमारी दुनिया बना रहा है. हमारा हर थॉट एंड फीलिंग ये मोमेंट पे दुनिया बना रहा है. मे बी दिस इज ओल्ड फूड, द काइंड ऑफ हाउस वी आर स्टेइंग इन, द काइंड ऑफ पे. तो ये शायद पुरानी कुछ चीजें का आज जवाब है. बट यहाँ पे, लाइक, इफ आई एम लिविंग इन अ ग्रेट हाउस एंड इफ आई एम फीलिंग मिजरेबल, तो व्हाट रियली आई एम गेटिंग इज मिजरी, राइट? तो अभी आप जहां भी हो, बट वहां पे जो फील कर रहे हो, दैट काउंट्स. सो दैट इज डिजाइनिंग योर होल एक्सपीरियंस. सो अगेन, तुम जो बोलोगे वही होगा. एंड दिस क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस हैव शेयर्ड के जस्ट फ्रॉम द मोमेंट वी स्टार्टेड सेइंग लाइफ इज काइंड, बिलीविंग भी नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्टेड सेइंग हाँ लाइफ इज काइंड, लाइफ स्टार्टेड बीइंग काइंड बिकॉज तुमने बोला, तुमने चाहा, तुमने मांगा. So yes, you are a magnet. Your words are a magnet. Your thoughts are a magnet. Your feelings are a magnet. So let's look at it more. You are a magnet. The law of attraction is unfailingly giving you every single thing in your life based on what you are giving out. You magnetize and receive the circumstances of wealth, health, relationships, your job, and every single event and experience in your life based on the thoughts and feelings you're giving out. Give out positive thoughts and feelings about money, and you magnetize positive circumstances, people, and events that bring more money to you. Give out negative thoughts and feelings about money, and you magnetize negative circumstances, people, and events that cause you to have a lack of money. Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know. But that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether we accept it or not. As surely as you think and feel, the law of attraction is responding to you.
It doesn't matter whether your thoughts and feelings are good or bad. You are giving them out, and they will return to you as automatically and precisely as an echo returns the same words you send out. But this means that you can change your life by changing your thoughts and feelings. Give positive thoughts and feelings, and you will change your entire life. तो हाँ, हम मैग्नेट है. व्हाट मैग्नेट डज इज मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, राइट? मैग्नेट अगर तुम बोलो कि प्लास्टिक को अट्रैक्ट करेगा, नहीं. मैग्नेट की जो क्वालिटी है वो वैसी ही चीज को खुद से अट्रैक्ट करेगा. तो हमारी जो क्वालिटी है, हम वैसी ही चीज को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. एंड इट इज अ लॉ. इट इज लाइक अनफेलिंग. इट डजंट केयर हु यू आर और हु यू आर नॉट. It works the same for everybody. Those who have made their lives incredible, they have used this law. Those of us also who have made our life not so incredible, we have used this. So it is unfailing. हर एक बार, हर एक चीज में आप आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज ये लॉ से है. जो तुम सोचते हो वो मिलता है. अगर कोई भी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचो तो वो होगा. कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव सोचो तो वो होगा. लाइक आई वुड से I keep saying I've done so many courses, so many this, that. But the way of relating with doing anything new generally would come with fear, you know. तो और probably come with disinterest. तो कभी वो चीज में आगे ही नहीं बढ़ पाए. और उसमें कोई बहाना दे दिया कि नहीं इंटरेस्ट है, नहीं जानना है. एक पर्सनैलिटी प्रॉबेबली उसी अराउंड क्रिएट हुई थी, बिकॉज देयर वाज नो डीपर और बेट. ऑफ कोर्स देयर कुड बी आल्सो बी कि कोई इतना रेजोनेट नहीं किया, बट इट कैन आल्सो बी कि वो चीज के लिए इनफ उसको फ्यूल नहीं मिला ताकि वो चीज आगे बढ़ सके. But literally, for the first time doing this book, probably, with unknown people also, or less known people, like, I didn't get that the kind of nervousness I would feel otherwise, being on such a journey. It was literally, हमने Sunday को final किया, Monday we started. But even Sunday night, I was like, अच्छा ही होगा, because now we know बुरे सर्कमस्टेंसेस को भी अच्छा बनाने को अच्छा ही फील करना है, और अच्छे सर्कमस्टेंसेस को अच्छा बनाने को भी अच्छा ही फील करना है. And that itself is such a huge shift. And just truly grateful कि a more positive way or a more workable way of relating to life is opening up, and which is so nourishing. So, as Gandhiji, I think all these great thinkers and philosophers and people and visionaries knew this law, and that is why they could do whatever they could. And when you know something precious, हमें चाहिए कि ये सबको मिले. हमें चाहिए कि ये हर जन तक पहुंचे. बट आफ्टर अ पॉइंट वो भी आ जाता है कि चलो, हमें पता है कि लोग इस तक पहुंचे नहीं पहुंचे, बट ये लॉ इतना स्ट्रांग है, इतना अनकंडीशनल है, इतना लविंग है, इतना कंसिस्टेंट है कि इट डज नॉट डिस्टर्ब मी इफ पीपल आर रीचिंग आउट और नॉट. क्योंकि लॉ तो काम करेगा ही, तो सूनर और लेटर लॉ विल ब्रिंग द पीपल अपॉन them, because it's like gravity. It is like, तुम जानो या नहीं जानो, it will work. तुम एक्सेप्ट करो या नहीं करो. आज हम 6 घंटे की डिबेट कर सकते हैं कि ग्रेविटी है कि नहीं, बट उससे वो लॉ को, कोई ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ेगा. वो तो रहेगा ही, डिबेट कोई भी जीते. सो कुछ भी चीज, दिस इज लाइक दैट अनक्वेश्चनड लॉ, कि ये तो रहेगा ही. सो यस, जो भी हम सोचते हैं, अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरी चीजें आती जाएंगी, और अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, so that small positivity is enough to transform our full lives. Yeah, Kanchu. Positive and negative thoughts. Your thoughts are both the words you hear in your head and the words you speak out loud. When you say to somebody, "What a beautiful day," you had thought first and then spoke the words. Your thoughts also become your actions. When you get out of bed in the morning, you had the thought of getting out of bed before you took the action.
You can't take any action without thinking the thought first. It's your thoughts that determine whether your words and actions will be positive or negative. But how do you know whether your thoughts are positive or negative? Your thoughts are positive when they are thoughts of what you want and love, and negative are thoughts of what you don't want and don't love. It is that simple and that easy. Whatever you want in your life, you want it because you love it. Take a moment and think about it. You don't want things you don't love, do you? Every person only wants what they love. Nobody wants what they don't love. When you think or talk about the things you want and love, such as, I love those shoes, they are beautiful, your thoughts are positive. Those positive thoughts will come back to you as the things you love, beautiful shoes. When you think or talk about the things you don't want and don't love, such as, look at the price of those shoes, that's highway robbery. Your thoughts are negative, and those negative thoughts will come back to you as the things you don't love, things that are too expensive for you. Yeah, thank you, Kanshu. So, मतलब this journey is about जो एरिया को काम कराना है, जो एरिया में आगे बढ़ाना है, जो एरिया को आगे बढ़ाना है, वहां पे पॉजिटिव थॉट्स का फ्यूल जाएगा, तो दैट एरिया विल ओपन अप. अगर वहां पे नेगेटिव थॉट्स का फ्यूल जाएगा, तो दैट एरिया विल क्रैश. सो इट इज अवर वे ऑफ रिलेटिंग विथ एनीबडी और एनीथिंग. जैसे कि कोई भी सिचुएशन है, वो एक सिचुएशन इज एक्चुअली अ न्यूट्रल सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं होता है. हर सिचुएशन इज empty and meaningless in itself. It's neutral in itself. Now, depending on the person who is looking at it or going through it, वो person के अंदर क्या है, वो चीज वो situation में reflect होगी. Like somebody probably, किसी का husband ने उन पे cheat किया, and that lady then went on like crashing her life and like feeling so bad, and 20 years back later somebody meets her and she's like probably having all the possible disease, and she's having debts, and she's having being so unhappy, and somebody's like kya hua, he's like my husband cheated on me and he left me, and like we are in this and this and this. Versus somebody else going through the same situation, and 20 years back you meet and she has made probably the biggest name for herself, and she has made everything work in her life for herself, and somebody asks kya hua, and she will be like, my husband left me and I realized कि nobody is coming to save me, and I realized कि मुझे अपने लिए जीना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे अपने लिए जीना है, and I did whatever I knew how to, and here I am today. Life left me with no choice. तो जो तुम बोलो वो होगा, इससे पहले वही है. सिचुएशन कुछ बुरी बात नहीं है, कुछ अच्छी बात नहीं है. हस्बैंड डूइंग वट एवर ही डज, तुम उसका जो बनाते हो वो तुम्हारे साथ होगा. अगर तुमने उसमें से कुछ पॉजिटिव डाला तो दैट विल बी द बेस्ट सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ. अगर तुमने उसमें कुछ नेगेटिव डाला तो वो तुम्हारी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ होगी. तो सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, तुम उसमें, तुम्हारे अंदर जो है तुम वो सिचुएशन में डालोगे और वो सिचुएशन वो होगी. अगर ऑरेंज को मैं स्क्वीज करके ग्लास में डालूं तो ऑरेंज जूस है, अगर मैंगो को जूस बना के डालो तो मैंगो जूस है. वैसे ही सिचुएशन इज लाइक एन एम्प्टी ग्लास. तुम्हारी जो क्वालिटी है वो सिचुएशन में आएगी और वो सिचुएशन उस तरह से काम करेगी. इसीलिए कोई जन बिजनेस करता है तो वो स्काई रॉकेट हो जाता है, और कोई जन बिजनेस करता है तो वो क्रैश हो जाता है. कोई जन रिश्ता शादी करता है तो वो प्रॉबेबली बहुत नरिशिंग होता है, कोई नहीं करता है और वो बहुत ही डेडनिंग होता है. तो शादी में कुछ भी नहीं है, बिजनेस में कुछ भी नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु इज डूइंग इट, that will define how that thing will act in your life. So what are you putting in any situation? Like before I came for the book reading,
Either I could have put, यार कैसे करेंगे, अरे कभी नहीं किया, Zoom नहीं आता, or I could have just made it so heavy and made it so dead कि this wouldn't have worked. Probably more than few days I wouldn't, it will show. Versus the full, अरे यार community का साथ है, अरे I know these people are there, अरे I know हो जाएगा, अरे I know ये power है जो हमारे लिए constantly काम कर रहा है, you know. And then suddenly this thing opens up. What Bena Masi yesterday shared कि maybe 8,000 का चश्मा है, नया है, अगर कोई और सिचुएशन में होता तो इज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहूं, इतना है, किसी को अक्ल नहीं है, आजकल के बच्चों को कमाया नहीं है तो इनको कोई कदर ही नहीं है, तो वो भी वैलिड होता और उसका रिजल्ट होता कि बच्चा शायद माँ से और दूर जाता, बच्चा शायद नेक्स्ट टाइम कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो नहीं बताता. एंड वर्सेस व्हाट हैपेंड इज लाइक, कुछ नहीं बेटा, जो होगा अच्छा ही होगा. एंड देन द मोस्ट अमेजिंग थिंग, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी सिचुएशन में कोई बुक और पेन लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेगा. एंड शी डिड इट. एंड कहाँ से तो कोई जन कहाँ से कूदा, कहाँ से चश्मा मिला, कहाँ से उनके हाथ में लाया, और उनका चीज, यू नो, थिंग, जो आउटकम हम सोच भी नहीं सकते, वो मिला, वो हुआ. Why? What is the difference between a बच्चा माँ से दूर जाए and बच्चे को माँ में बहुत ही connection feel हो? The kind of story line a person made, or kind of thoughts and feelings a person added to that situation. And that is the difference between, you know, life that is working and not working. हमने life में एक story line डाल दी है that it doesn't work. So life has no choice but to give us more and more situations and circumstances that don't work. So let's, you know, clean up first. अगर मैं गंदे ग्लास में कुछ भी नया डालूंगी तो वो खराब ही होगा. सबसे पहले it's also a chance to clean up our stories. First to wash up our stories, to wash the glass. So फिर कुछ नया डाले तो वो दिखेगा भी, और we will be able to feel it also, you know. So it's also a great chance to cleanse. And to cleanse, I remember एक once I had heard this story कि somebody was working it with like addicts, you know, and they are like, one of our biggest work with addiction is to get them to say we are an addict. अगर हम वहां तक पहुंच गए, you know, then our door opens up, then our life opens up. क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए sometimes years and years का काम लग जाता है. That's why, like, you know, in Alcoholic Anonymous also they say, hi, I am Bhumi and I am an alcoholic. Because पहले हम वो चीज के ट्रैप में है वो एक्नॉलेज करना जरूरी है. जब हम वो एक्नॉलेज करें, देन वील बी ओपन टू व्हाट एल्स टू बी डन. सो सेम, हम अपने नेगेटिव थॉट्स के ट्रैप में है वो एक्नॉलेज करना जरूरी है. जब हम वो एक्नॉलेज करें, देन अ डोर ओपन्स अप, यू नो, एक छोटी लाइट आएगी, एज अगेन मासी वाज मेंशनिंग, यू नो, एंड थिंग्स विल स्टार्ट ब्राइटनिंग. तो जो हम बोलते हैं वो होता है. हम बोलेंगे अच्छी लाइफ है, अच्छी दुनिया है, अच्छी मॉर्निंग है, तो वैसा होगा. नेगेटिव बोलेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोलेंगे पॉजिटिव होगा. सो ऑफ कोर्स लाइफ में भी वही है ना, अच्छी चीजें हो रही है तो हमें अच्छा फील होगा, बुरी चीजें हो रही है तो बुरा फील होगा. अगर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक शूज है, एंड somebody with the love for shoes, they won't even look at the price tag, they will just be happy कि क्या लगेंगे, क्या मजा आएगा, क्या क्या फील आएगी. And you will see they will have a cupboard full of shoes where there is no dearth, like they don't even once think about the price tag, and universe gives them such plenty के they will have to keep probably fill their warehouses with it. Versus जो सोचता ही रहेगा कि यार ये तो महंगा है, अरे ये तो लूट मची है, अरे लोग आजकल ये ही नहीं है, अरे ये तो कंज्यूमर, तो देन दे वोंट इवन 3 गुड शूज दे वोंट हैव, एंड जो होगा वो भी सड़ सड़ के पहनेंगे. सो हर चीज को हम कैसे रिलेट करते हैं वैसे वो चीज हमारे साथ बिहेव करेगी. या कंचो. To just add to you, because यहाँ पे shoes का example है, you know, living in the same house. Okay, I live with my mother-in-law and father-in-law, and बस few days की पहले की बात है, पापा ordered a chappal, like he asked me, you know, you order a chappal, so say it was X amount, okay, not that expensive, so I ordered it online for him.
versus my mother-in-law. So she ordered, say, 8,000x the price of what my papa has ordered. Both can afford it. Okay, both need chappals in life. एंड दे हैव बोथ हैव द सेम मनी राइट. ऐसा नहीं है किसी के पास कम है कि ज्यादा है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो. एंड लाइक यू सेड, अ कबर्ड फुल ऑफ चप्पल्स. ओके, एंड दैट डज नॉट स्टॉप यू. शी थिंक्स आई डिजर्व दिस. शी वेंट आउट एंड शी गॉट इट. व्हेन वी गॉट टू नो द प्राइस, वी कुड नॉट इवन इमेजिन कि इतनी महंगी चीज कोई पैरों में क्यों डालेगा. She loved it. And you should have seen the happiness on her face and the shock on our faces. Point being, this example just, on the same page, मतलब same घर, सब कुछ same खाना पीना, everything same affordability, but two different way to look at things. If you think, okay, I deserve this, you can easily get it. Is what it this completely makes sense. Yes. And I think आगे हम देखेंगे कि sometimes, like I have realized there are so many things I have judged. And when you judge something also, it stops from coming to you. Correct. So versus when you give love, it will find any way in the world to come to you, to reach you against all What odds. she said, I deserve, Yes. you say, I deserve this, I deserve the power, I deserve the happiness, I deserve all the wealth in the world. We have to say that more to ourselves. So it will come, why not? Right? Thank you for sharing that. We'd love to keep hearing from you, your stories also. And किसी और को भी इसके related story आए, please raise your hand. We would love to hear. It will bring more diversity and flavors into the sharing. Most people think and talk about what they don't love more than they think and talk about what they love. They give out more negativity than love, and in doing so, they are inadvertently depriving themselves of all the good things in life. It is impossible to have a great life without love. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. And people who are struggling think and talk about what they don't love more than they do love. So here, just एक business owner को सोचो और एक person who is not having any money, not having any work, and hates his life completely को सोचो. Okay, so the person, the business owner, like who has like a big business, if you can imagine his day, वो चलते फिरते उसके दिमाग में बस वही है कि मैं क्या करूं कि और ग्रो करे, मैं क्या करूं कि एम्प्लॉइज बेस्ट परफॉर्म करे. उनके कॉन्वर्जेशन में, उनके फ्रेंड्स मीटिंग में, उनके लुकिंग एट द न्यूज आर्टिकल में, उनके हर चीज इज अबाउट what can I do to grow this business. When he look at the roads also, when he look at the infrastructure also, when he look at meet the people also, what do they need that I can provide that will probably help me grow. So he's always looking towards what will work, what will make me grow. So उनको कहाँ से भी unbelievable possibilities, unbelievable opportunities, unbelievable circumstances आते हैं that will keep taking him on this journey of growth. Versus somebody जिसके लिए चीजें काम नहीं कर रही है. If you can imagine what is working, what is happening in his head is, यार लाइफ ही खराब है, अरे जॉब मार्केट ही खराब है, अरे चीजें होती ही नहीं है, अरे मेरे पास तो सब डिग्री है पर अभी मार्केट खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यार मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ध्यान ही नहीं दिया, अरे मेरा साला पढ़ाई ही खराब था, काश मैं वो कॉलेज में चला जाता तो मेरे साथ सब अच्छा होता, काश मैं अमीर घर में पैदा होता तो मेरे साथ सब अच्छा होता, काश मैं कोई और देश में पैदा होता. ही इज जस्ट ऑलवेज फीलिंग व्हाट इज नॉट वर्किंग. दे आर जस्ट फीलिंग देयर लाइफ एंड इट्स लाइक दलदल एज वी से. तुम नेगेटिव थॉट्स में जाते जाओगे तो दलदल से हम जितना बाहर जाने की कोशिश करते हैं उतना हम घुसते जाते हैं टिल इट swallows us. And this is that कि मैं बेचारा, मैं खराब, and yesterday again we touched, Benamasi mentioned कि just पेरेंट्स के लिए 5 ग्रैटिट्यूड करने से things started opening up for her. तो ये हमारा there is something called a source relationship,
our parents are our source. तो जो हम उनके लिए फील करेंगे वो knowingly unknowingly हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में आएगा. अगर हमें हमारे पेरेंट्स के लिए इनफ लव, इनफ रिस्पेक्ट, इनफ रेवरेंस नहीं है, तो वी विल सी आवर एरियाज ऑफ लाइफ विल नॉट वर्क और वी विल नेवर एवर be able to feel the fulfillment that we want to fill in our life. So और कितने साल हम वो स्टोरी चलाते रहेंगे कि ये नहीं दिया, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे है, वैसे है, because you are half your mother and half your father. as हमने यूनिवर्स के लिए कोई और पर्सन है ही नहीं. तुम जो उनके लिए फील कर रहे हो तुम खुद के लिए रीअश्योर कर रहे हो. तुम्हारे कप में ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा वैसा डाल रहे हो. And then we can't imagine that to taste good or do any work. So it is very, 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 very important that we cultivate this love for our parents. And since this is not a very work, activity centered this thing, but there is something called Ho'oponopono. I think it's a very beautiful and a simple way to fill our life with goodness. So Ho'oponopono, there's this community where wo community mein if any person does anything wrong, instead of, sidelining them, outcasting them, they actually make them sit in the center and they send a lot of praises. They send a lot of good vibes. I hope I'm talking about the same community. Many a times I mix up stories and I apologize in advance for that. But from what I remember, so उन लोग उनको इतनी अच्छी अच्छे वाइब्स देते हैं, अच्छे वो देते हैं, रिमाइंड कराते हैं all the good thing that person has done, all the great capabilities that person has, and and that transform their lives. So same we can do in any area of our life that is not working, with ourselves and with our parents to begin with. Because हर रिश्ते में कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है. And when we acknowledge all parts, हाथी की पूंछ भी लाएंगे, सूंड भी लाएंगे, उसका ये भी लाएंगे और नीचे से लाएंगे, खंबे लाएंगे, तो पूरा हाथी आएगा. So in Rishta, if we can acknowledge the parts that hurt us, acknowledge the parts that we are able to forgive, acknowledge the parts we are thankful for, and acknowledge the parts we are in love for. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. अगर हम पेरेंट्स के लिए, अपने लिए अगर ये शुरू करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. अगर आप में पेशेंस है, अगर कंसंट्रेशन है, यू कैन ऐड रीजंस. आई एम सॉरी फॉर दिस दिस दिस, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस दिस दिस, थैंक यू फॉर दिस दिस दिस, एंड लव यू फॉर दिस दिस दिस. दिस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. अगर सेशन से 5-10 मिनट पहले आके भी अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए वन और द अदर वे होलनेस ला सकते हो, एक्सेप्टेंस ला सकते हो, फॉरगिवनेस ला सकते हो, लॉट ऑफ लव ला सकते हो, यू विल सी योर लाइफ चेंज. जैसे कि बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी उसके फाउंडेशन पर डिपेंड करती है, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग विल क्रैश. और ट्री कितना बड़ा हो गया उसके रूट्स पे डिपेंड करता है. हाउ अवर लाइफ विल वर्क हमारे सोर्स रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. अगर हमें उनके लिए प्यार नहीं है, हम मार तोड़ के लाइफ में कुछ चीजें पा भी ले, वी विल नेवर एवर बी एबल टू एंजॉय दैट. इट विल नेवर, वो हमें रस नहीं आ पाएगी. सो यस, लेट्स ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कीप giving a lot of love to our parents and gratitude because what they have given us. They say कि parents का only काम आपको जन्म देना है, उसके अलावा जो भी दिया is bonus, because just to be on this earth and have this privilege of discovering all the things in life is the biggest privilege, and we cannot ever pay back to them for this privilege. So yes, let's send a lot of love to all our parents and for bringing us here, and uske alawa all that they have done for us. One word frees us of all the weight and pain of life. That word is love. Talk about what you love. When you talk about any difficulties with money, a relationship, an illness, or even that
the profits of your business are down, you are not talking about what you love. When you talk about a bad event in the news or a person or situation that annoyed or frustrated you, you are not talking about what you love. Talking about the bad day you had, being late for an appointment, getting caught in traffic, or missing the bus are all talking about what you don't love. There are many things that happen each day. If you get caught up in talking about what you don't love, every one of those little things bring more struggle and difficulty to your life. You have to talk about the good news of the day. Talk about the appointment that went well. Talk about how you love being on time. Talk about how good it is to be full of health. Talk about the profits you want your business to achieve. Talk about the situations and interactions you had in your day that went well. You have to talk about what you love to bring what you love to you. Yeah. जैसे कि वन ग्रीक प्ले राइटर सेड कि एक वर्ड है जो हमें फ्री कर देगा. सो मेनी ऑफ अस लॉन्ग फॉर फ्रीडम. सो मेनी ऑफ अस probably it's a human nature to feel free, to feel expansive, to feel that joy. एंड इट्स लाइक वो एक वर्ड है जो हमारे लाइफ में वो चीज अवेलेबल कर सकता है, और वो वर्ड है लव. Because without love it is impossible to have a great life. So simply जिसकी great life है, उन्होंने जो चीज उनको पसंद है, जो चीज they love, they have talked more about that. And जो लोग struggle कर रहे हैं, या हम जो एरिया में struggle कर रहे हैं, let's check what is our story in our head that is going on. ये एक awareness की journey है. हमने create किया है, that is the bottom line. कैसे क्रिएट किया है? बाय कॉन्स्टेंटली द स्टोरीज दैट आर रनिंग आवर लाइव्स. एक होता है कुछ होता है, उसके बारे में हमारी एक स्टोरी होती है, उससे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स आते हैं. तो हम ये हमारी स्टोरीज में इतने अटक गए हैं, और हमने इतनी डिसएम्पावरिंग स्टोरीज बना ली है दैट हम बस उसमें डूबते जा रहे हैं. So let's catch what our stories are about so many areas of our lives, and let's free us. Let's free those areas with love. So how do we do that? So many times if we see, we will hear अगर हम थोड़ा aware हो जाए, there are people who are always talking about हाँ बीमारी चल रही है, हाँ जॉब मार्केट खराब है, हाँ पैसा, हाँ महंगाई. Like anything we buy, the story of महंगाई goes. Anything we buy, the story of how politicians are this goes. Any work needs to happen, corruption of this. मतलब हम ऑलवेज यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि हेलो देख, ये 10 एरियाज है जो नहीं काम कर रहे हैं, ब्रिंग इट ऑल, सब लेके आ मेरे लाइफ में, चल टेबल पे लगा. एंड वही आएगा. एंड देन यू विल बी लाइक, देखा मैंने तो बोला था करप्शन ज्यादा है, देखा मैंने तो बोला था. अरे तुमने मांगा तो मिला यार, क्यों मांग रहे हो? बताओ क्या चाहिए. जो जहां ध्यान दोगे मैं वही ला सकता हूँ. सो ये फोकस ऑन व्हाट यू वांट, एंड देन द यूनिवर्स विल बी मोर इक्विप्ड टू ब्रिंग दैट टू अस. So simply, we will see this in our lives. We will see this in our phases. Sometimes हम stuck feel कर रहे हैं. We can't stop talking about it. We can't stop talking about what keeps us stuck. And that very thing will just deepen our stuckness more and more. So again, this Nipun Mehta I was talking about, one of the thing they started doing was डेली शेयर, डेली गुड का एक पेज बनाया था, वेर दे आर जस्ट endlessly sharing positive news across the world, because there is so much magic, there is so much positivity that is going around everywhere, but we are not talking about it. उसको बस एक granted लिया गया है, and just by focusing that, so many possibilities open up, so many people's lives opened up. I know my life has changed, just with that. So सिंपली हम बोलेंगे अरे वॉर चल रही है तो वॉर नहीं देखेंगे क्या, वहां पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो वो नहीं, अरे देखो, फिर कल तुम भी उसी में खुद को पाओगे. यू आर नॉट, इफ यू थिंक बाय वॉचिंग वर्ल्ड न्यूज यू आर सेविंग द वर्ल्ड इन एनी वे, नो. what you are doing is giving that more power, giving that more energy, and making it bigger and bigger.
वर्सेस द ओनली वे, अगर मेरे को रूम में लाइट चाहिए, शाम को 7 बज रहे और लाइट नहीं है, मैं बोल रही हूँ अरे लाइट कम हो रही है, लाइट कम हो रही है, लाइट कम हो रही है, 9 बज रहे और डार्कनेस हो रही है, मैं चिल्लाए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, किसी को मारने जा रही हूँ कि तुम्हारी वजह से लाइट कम हो रही है, लाइट कम हो रही है. एंड probably there is something called dark night of the soul when we are so caught up. ये मेरा उसका वर्जन है, इट कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ये मैं उसको समझती हूँ कि जब हम उस चीज में इतना अटक जाते हैं कि इट्स सो डार्क एंड वी जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, वर्सेस सिंपली आई कैन जस्ट गो एंड टर्न ऑन द लाइट, इट्स जस्ट 1 सेकेंड का वो. सो हम काफी बार चीजों की नेगेटिव चीजों को फाइट करने में लग जाते हैं, और जब हम उसको फाइट करेंगे इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर, वो फायर बढ़ेगी ही. अगर तुम डार्कनेस को फाइट करके हटा सकते तो बात ही क्या होती, हम सबकी लाइफ आज खिल गई होती. बट आई थिंक सदगुरु सेज दैट ओनली वे टू गेट rid of the darkness is turn on the light. The only way of making your life work is add good things. Fill it with positivity, fill it with light, fill it with love. It will work. You don't have to go fighting on with what is not working. So let's start aaj ka din. Let's take this on. Let's talk about what we love. Let's look at what works for us. Let's focus on all the good things. Aaj catch 3 people, intentionally have the conversations कि तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, उसकी कॉन्वर्जेशंस करो. इंटेंशनली कैच एंड आस्क देम आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स यू अलाइव. yesterday I posted this question. Today we won't have time to today we won't take time to dwell into it, but probably in coming days we will discuss. हमें काफी बार पता ही नहीं है क्या चीज है that brings us joy. हमें पता ही नहीं है हमें क्या नहीं, हमें क्या पसंद है, बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंड यूनिवर्स एंड्स अप ब्रिंगिंग दैट टू अस. अरे क्या चाहिए वो तो बताओ. So let's start looking at what we naturally love. Let's start talking about what we love. Let's start looking around and see, wow, क्या अच्छा है. Wow, आज पेड़ खुले. Wow, आज sun आया. We are going to live one more day. Wow, Earth खुद घूम रही है. Everything is going well. हम सब हमारे solar system सबको ध्यान देते हैं. We will, check with all of that. So today, that is our this thing. Talk about what is working, share what is working, ask what is working, and look and acknowledge what is working. Yes, Shanti. आई थिंक मेरा वेकेशन ये पूरा ये सोचने में ही गया था कि मैं अपना वेकेशन मतलब बिफोर वेकेशन कि मुझे मेरा वेकेशन कैसे स्पेंड करना है. लाइक जो मैंने सोचा था वो मुझे 101% मिला है. अभी मैं वो देख रही हूँ, जो एक्सपीरियंस जो चीजें मुझे मेरे लाइफ में चाहिए थी मेरे लिए मेरे डॉटर वो मुझे मिल गई. सो आई एम सो 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 मच हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू. And we did this magic book together. Like हम 5 cousins ने 5-6 cousins ने किया. And literally 2 cousins really, things opened up for them. And हमने सबने same book की. But 2 of them were clear. Like Shanti was clear about all the things she wants in her life, and they started happening. वो चीजें उनको मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई. And another was clear for her love for travel. तो मतलब she probably missed half the book reading because she's like पता नहीं क्या हो रहा है यार. मतलब वो हर week पहले probably 10 दिन she did book reading, then probably half the week she's traveling. She started with यार अभी नहीं हो पाएगा, अभी ऐसे है. She's like अरे मैं तो जा रही हूँ, अरे मैं तो जा रही हूँ. So with fuel, the direction of where you want to go is also so important. कि जब हमें पता है हमें क्या चाहिए और फिर उसमें लव लगाएंगे तो फिर चीजें खुल जाएंगी, चीजें खिल जाएंगी. So let's also ask, what is it that we want from our life? What is it that brings us love in our life? What is it that we enjoy doing and being? And thank you so much. This was just the right share we needed. And all your shares really enhance this conversation. So please keep coming in.
and sharing. बीच में भी किसी को share करना है, it will really help. And starting and ends are also the right time for that. And thank you so much, everyone, for being here. And it's 10:30, so we will end for whoever wishes to go, and whoever can stay. Yes, the place is open for more shares. So thank you, all of you, for being here and being part of this journey and giving us this privilege of doing this together. Thank you, thank you, thank you. And those who can stay back, please do. Yes, Benamasi. आज का चैप्टर था कि जो हम लोग बोलते हैं वही होता है। उसके बारे में तो 5 5 महीने मतलब 3 महीने के पहले ऐसा 3 महीना मेरा ऐसा गया कि मेरे जेठ जी का तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब था, तो इधर ही थे मेरे पास, तो मेरे पूरा ध्यान उधर ही था। तो मेरा मैजिक बुक का जो करने का था वो मेरा नहीं हो सकता था, 3 महीना नहीं हुआ। फिर एक बार छूट गया, फिर वापस वो जोन में मेरे को आने का था, मगर किधर भी नहीं, खुद से ही हो नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ही बोला था कि नहीं मेरे से नहीं होता है। अरे मेरे से ये होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो भगवान ने दिया ही नहीं। और मेरे मिस्टर जाते थे काम पे, और मैं टाइम देखती थी, हाँ तो इतना थोड़ा काम है, फटाफट करके, अरे मेरे को तो नींद बहुत आ रही है, मैं सो जाती थी। 9:15 9:30 में सुबह, और थोड़ा भी काम रह जाता था ना तो मेरे को टेंशन, अरे उठ के कर लेगी, सो जाती थी। फिर मैं बोला नहीं, ये भी मेरे को नहीं चाहिए, कि मेरे को 9:30 सोने का भी नहीं है। तो मैं भगवान से हमेशा बोलती थी कि भगवान कुछ ऐसा कर कि ये टाइम है ना, कि जो मेरे को चाहिए वो दे। तो मंदिर भी गई वो टाइम पे, 2 3 दिन मंदिर गई, मगर मजा नहीं आया उसमें भी। फिर बुक रीडिंग किया, उसमें भी मजा नहीं आया। फिर रोज भगवान को एक प्रार्थना करती ही थी, रात को भी मैं करती थी कि भगवान आज तो मैं ना 9:30 ना, सुबह 9:30 सोएगी नहीं। क्या बोला मैंने, मैं सोएगी नहीं। तो नहीं का तो मतलब मेरे को मालूम था करके कि वो, उसको ये नहीं मालूम करके नहीं का, तो भी सो जाती थी। और अचानक ही भावना के मैसेज आया करके कि बेना मासी मैं ये कर रही है, और उसने टाइमिंग भी भेजा। तो मैंने दोनों टाइमिंग, सिर्फ मेरे को, अरे मैंने प्रार्थना वही किया था करके कि मेरे को सुबह का टाइमिंग चाहिए, मगर मैंने को दोनों टाइम डाला। और जब भी भावना ने डिक्लेयर किया करके 9:30 है, बाप रे, मैं बोली करके भगवान तूने जो मांगा है 9:30 मेरे को जो चाहिए वो दे, तो वो मेरे को दिया। तो आज ऐसा गुस्बा, थोड़ा रोने का भी आया कि भगवान जो मांगा ये टाइम मैंने इसके लिए मांगा था। और 2 3 दिन में सेशन में बैठी, मेरे को ऐसा नहीं कि नींद नींद भी आ रहा था, तो कुछ भी खा लेती थी, मगर आज मैंने कुछ भी नहीं खाया और एकदम फ्रेश है। और पानी भी ज्यादा पिया, तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिला। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, भगवान का भी थैंक यू कि ये टाइम जो मेरे को चाहिए था वो मिला। थैंक यू मेरा आपका लाइफ थैंक चेंज यू कि करने के आपके लिए। प्रेयर से आज हम सब यहाँ है। यू डोंट नो किसके प्रेयर से किसकी चीजें खुलती है। तो मे बी इट इज प्रॉबेबली आपका इंटेंशन, आपका प्रेयर आज हम सबको यहाँ लाया है। तो थैंक यू। एंड 9:30 तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, या हम 9 से 10 सोच रहे थे, या 10 से 11, बट थिंग्स हैड टू हैपन। So thank you for clearing the way for us and putting your intention. Thank you, thank you. And thank you for all your sharings. They bring a lot of love and energy to us. Thank you. I think that is our clue to end this. Thank you all for being here and looking forward to see you tomorrow. Ask yourself what you love and bring more love in your life. Thank you.